Okay, is my voice audible to you? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. Finally. Okay, so uh, welcome everybody. Is my screen visible to you No, sir. right now? Yes, Yes. sir. Okay, so in this okay, so first of all, my introduction. My name is Shankho, and I am from West Bengal, and I am currently doing my PhD in IIT Ropar, and currently I am in my PhD fifth year. So I have taken this course for last few years, engineering mathematics 2. I hope you all know that Professor Jitendra Kumar is the course instructor. I hope that you are all watching the videos regularly. Okay, so I will just try to make some notes, but right now I will have some ready-made notes which I will from the previous semesters that I made, and I will use them as a benchmark. Okay, so please stay with me, and it will be rather interactive session. I may fumble in some cases. Okay, so I request all of you to be quite attentive and also join throughout the class, and please cooperate with me. If I fumble, please correct me, and also it will be rather interactive one. If you have some problem, I request you also, if you have some problems, you present with the class. Okay, so that we both can benefit from this interactive session. So it is not like that I will just read down the notes. I want you to actively participate, and in certain cases there may be some flaws in my logic also. So I hope that you will understand it, and please, if some aspects I fumble, and there is some logical ambiguity in the notes, please rectify it. Okay, I always believe that learning is a two-way process. Okay, so with this short introduction I will start. So I will start by the concept called line integral. So any of you can you please say that a prominent example of line integral, a prominent example of line integral, can you say a prominent example of line integral where line integral gives you some sort of discusses about some physical aspect? Anything? You have probably read it in your class 8th or 9th standard. Anybody? It is about work done by a force, right? So how work is defined? Work is defined as line integral f dot ds, right? Any question in this? So line integral, how we define? You have some quantity. Okay, for example, you have some quantity is the in this p0 point. You want to move this quantity along this curve up to ps with implementing a force f. Then the work necessary to be done to doing this stuff is line integration p0 to ps, p0 to pn. Okay, integration f dot ds. So first of all we need to like just sharpen some concepts. For example, in throughout this class, throughout this engineering mathematics 2 course, we will think point as a vector. So you have any point and you have some coordinate. So what is that coordinate? That coordinate is x comma y comma z, and this x comma y comma z, you can always think this coordinate as a vector. So if you have any point x comma y comma z and it is a real valued function within the domain D, and C be a curve that lies in D given by the parametric form rt equal to xti plus ytj plus ztk cap. Okay, so
this xt, yt, zt is the evolution of the coordinates with respect to the time t. So for example, if I consider 2D plane, just rt equal to xt plus ytj, please tell me that if I consider, please listen carefully first what I am saying in the question. For example, you have xt equal to okay, so first and foremost you have xt equal to cosine t and yt equal to sine t. So what will be the path? And t varies from 0 to 2 pi. xt equal to cos t and yt equal to sine t. Are you listening to me properly? xt equal to cos t, yt equal to sine t, and t varies from 0 to 2 pi. So what will be the path? Anybody? Anybody please open up. Whatever comes to your mind, please answer. Anybody? Kanchan Patil sir, can you tell what is xt equal to cos t and yt equal to sine t? xt equal to cos t and yt equal to sine t. Sir, screen is not visible. Okay, not a problem. I am asking you that xt equal to cos t and yt equal to sine t. What will be that curve? Is equal to 1. Xt equal to, that is you are giving some condition. Okay, so when what is the relation between cos t and sine t? First tell me that. Oh, that sine square t plus cos square t is equal to 1. That's na. Yes. Now I am giving you xt as cos t, yt as sine t. So what you get? You get x square plus y square equal to 1. So what is x square plus y square equal to 1? R bar of t. X square plus y square equal to 1. This is a equation of Circle. yes, it is a equation of circle. I want everybody please respond to me and forget about anything. Nobody knows everything. Even I will do lots of mistake while this class. So mistakes are the pillar of learning. So if you do not open up, it will be very difficult for you in the upcoming days, because the next your entire thing will depend on how much you can do good communication. For example, my communication skill is very bad. Okay, so just communicate with properly. Whatever I may ask you, whatever comes in your mind, whatever may be silly, just open it. Okay, so x square plus y square equal to 1. This is a equation for ellipse. You can say an ellipse, but to be more specifically, it is a circle. Now if I define, so first you need to know what these curves are, because you gonna integrate over those curves. For example, instead of xt equal to cos t, yt equal to sine t, if I give you xt equal to 2 cos t, yt equal to sine t, what will be it? What will be the path? Xt equal to 2 cos t, yt equal to sine t. Now what will be this equation? Sir, oval. No, it is yes. You just say something. It is Oval, sir. it is an ellipse, right? It is an ellipse with semi-major axis of length 2 and semi-minor axis of length 1. So what will be the governing equation? The governing equation will be x by 2 whole square plus y by 1 whole square. This is equals to 1.
Okay, so and one more example is, excuse me Krishna, please do not again and again unmute yourself. If you want to say something, then only unmute yourself, Okay, sir. otherwise I will remove you. Okay. Okay, so another one curve is the, apart from circle and ellipse, another one is the, I am giving you just one example. For example, xy equal to constant. If xy equal to constant, that means xt equal to t and yt equal to 1 by t. Then this equation will be, then this governing equation will be a rectangular hyperbola. Okay. Yes, sir. Okay, so now I will upload the note, so there is no need to read those stuffs. So there is just a basic theorem. Just read this theorem with me. I am giving you 2 minutes. You read this theorem with me. Hello Sumitra, how are you? Glad that you joined again. Okay. Thank you, sir. I'm fine. Okay, so this theorem, please, and also please I request everybody that you please join with me for the entire course. Okay, it is an opportunity for me also to sharpen my ideas. For example, Sumitra, I taught engineering mathematics 1 in the last class, last semester. I think Neeraj also joined with me for a few classes, then he just left, Neeraj Kujur. Yes, sir. And Sumitra joined each and every classes, and she got good grade in the NPTEL exam. Okay, so I hope that you will join with me in the entire course. Okay, so read this theorem. I request each and everybody to please keep a notebook and a pen, running pen with you. So this is a theorem. I will not go into the proof. What does this theorem say? This theorem say that let C equal to xt I cap plus yt j cap plus zt k cap be a parameterization of the curve C lying in a domain D subset of R cube. If f d to R is continuous and the component function xt, yt, zt are differentiable, then the line integral of f over C exists and is given by integration C fxyz ds. Now this ds is the elementary arc length, and this elementary arc length is, you can write it as ds dt dot dt. ds means ds by dt into dt, and then ds by dt is equal to square root of dx dt whole square plus dy dt whole square plus dz dt whole square, and then the dt part. And this ds is modulus of dr dt dt. dr dt means the position rt that is differentiated, and then the magnitude is determined. So ds is a magnitude coordinate, scalar coordinate, remember. Okay, now I am giving you just read this theorem for 2 minutes. Just write down this theorem in your notebook with a pen. Just write down it, then we will solve the example. The example is given. Okay, chalo, I am giving you the parameterization form also. So just write down the theorem. Let C equal to xt I cap plus yt j cap plus zt k cap, which is a parameterization of the curve C lying in a domain D, and this D will be always a smooth domain in our case in R cube. If f spanning from D to R is a continuous and the component function xt, yt, zt are differentiable, then the line integral of f over C exists and is given by integration C fxyz ds integration a to b f xt yt zt square root of dx dt whole square plus dy dt whole square plus dz dt whole square dt. We write this ds as within bracket, within modulus of r. This arrow means vector and this prime means dr dt, and then its magnitude. The dr dt vector will be dx dt I cap
plus dy dt j cap plus dz dt k cap, where I, j, k cap are the unit normal direction vectors towards x, y and z axis. Then its magnitude will be square root of dx dt whole square plus dy dt whole square plus dz dt whole square. Okay, I hope this theorem is clear to you. I am giving you 1 minute to just see the theorem, and then your task will be to solve this integration, this example 3.1, where the integration is you need to integrate fxyz equal to x minus 3y square plus z over the line segment 0 0 0 to 1 1 1. And first I give you a clue. You need to determine the parametric representation of the line that joins the point 0 0 0 1 1 1, and remember your t will vary. So now solve this example quickly. Sir, answer is 0. 0. Okay. Very good. So parameterize, you need to first parameterize the curve as rt equal to ti plus tj plus tk. Then you need to then xt equal to yt equal to zt equal to t. Then this vector dr dt vector is equal to square modulus is square root of this derivative of this t means 1, derivative of this is again component wise derivative 1 square plus 1 square, this becomes square root of 3. Now your t varies from 0 to 1. Okay, 0 to 1 xt minus 3y square t plus zt. Now you need to put the values of t here. So here x equal to t, y equal to t, z equal to again t. So that becomes t minus 3t square plus t square root of 3 dt. So that means square root of 3 t square minus t cube 0 to 1 equal to 0. So that means if you are applying this force fxyz equal to this force, and then the integration of this function over this line segment becomes 0. Next problem is evaluate C
2 plus x square y ds. Next problem is evaluate C, integration 2 plus x square y ds, where C is the upper half of the unit circle in the xy plane. Here f equal to fxy is a function of two variables. You need to parameterize the curve C equal to xt equal to cos t, y equal to sin t, 0 less than or equal to t less than or equal to pi, because you are considering the upper half plane. Now you know what you have to do. Just up example 3.1 को देखो and then you try to solve example 3.2. Neeraj, please do this problem. I need answer from you now. Okay, sir. And in NPTEL exam, you will mostly get this kind of problems. There are some advanced problems in this sheet also. We'll read them also, but our main focus will be to solve this kind of simple and small problems.
Are you solving this problem? Everybody, please solve this problem. Sir, 2 pi plus 4 by 3. Okay, so let's solve this with me. 2 plus x square y, so your x is cos t and your y is sin t, so integration over 0 to pi. 2 plus cos square t sin t square root of dx dt whole square plus dy dt whole square dt equal to 2 pi plus 2 by 3. 2 pi plus 2 by 3. No, sir. Actually, I have made a mistake that I take the question 2 plus 2 x square y. And your answer, you got answer, 4 by 3. In place of 2 by 3. or you get 4 by 3. Hmm. ओके सुमित्रा, आप समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा बहुत जो कम हुआ है एनपीटीएल में क्यों हुआ है? Yes, sir. कोई बात नहीं, ठीक है. नीरज, be a bit more attentive. Okay, let's say be the curve consisting of line segments joining 0 0 0 to 1 1 0 and 1 1 0 to 1 1 1. So if, just remember this, if C is a piecewise smooth curve, then it is a join of finite number smooth curves written as C equal to C1 union up to Cm. Then the integration over the entire C, you can do integration stepwise and then take the addition. That means addition can be distributed over the integrations. Okay, so what you do first line segment joining 0 0 0 to 1 1 0 and then again 1 1 0 to 1 1 1. Okay, I will not show you the parameterization, so think what will be the parameterization. 0 0 0 to 1 1 0, anybody? 0 0 0 1 1 0, what will be the parameterization? Sir, x is equal to t, y is equal to t. And z equal to 0. 0. And for the second part, x equal to 1, y equal to 1 and z equal to t. Very good. Now integrate over t equal to 0 to 1, determine the stepwise integration and then sum them to get the final answer.
Sir, minus 1 by root 2 minus 3 by 2. Minus 1 by root 2 minus 3 by root 2 Minus 3 by 2. minus 3 by 2, then you need to just add them. Okay, let's move. So okay, already we have discussed that what will be the values of c1 and c2. Now yes, so first you need to just, this is c, you need to integrate over c1, then over c2, add them up. For the first part you will get the answer to be minus 3 by 2, and for the second part you will get minus root 2 by 2, that is actually minus 1 by 2. If you add them up you will get minus 3 minus root 2 by 2. So okay, so now move to the next problem. Example 3.4, evaluate integration 2x ds where c is the arc of the parabola y equal to x square from 0 0 to 1 1 followed by the like segment join. So first you need to integrate over the parabola, then you need to integrate over the line segment of 1 1 comma 1 2. Solve it. Sir, how do you set up the value of a and b, sir, for integration? Hello. सर मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला, ये वाला? Sir, how do you set Yes, up the value sir. for a and b for integration, sir? Lower limit and upper limit. This lower limit upper limit, okay, no problem. Here 0 x and 1. minus 3y square plus z equal to ds. So what सर is the, सेकंड स्टेप से बता दीजिए। कौन सा, ये c2 के ऊपर इंटीग्रेशन? यस सर। ओके, ये तो बहुत इजी है। c2 का मतलब क्या है, यू आर मूविंग फ्रॉम 1 1 0 टू 1 1, सो योर x and y आर फिक्स्ड इट एट 1, ओनली योर z इज चेंजिंग.
In both the points your x and y coordinate are same, so you just put x equal to 1, y equal to 1 in this expression and vary your z from 0 to 1 and take the parametric representation as t. So here your f becomes f11 comma t, and this ds will be d of 1 dt equal to 0 plus d of 1 dt equal to 0, and dt by dt is equal to 1. So 1 square root 1 is equal to again 1. So 0 to 1 f11 t 1 dt. Now you put 1 1. So x square minus 3y square, x minus 3y square, it becomes 1 minus 3 plus 2. So minus 2 plus t dt. जस्ट हो गया खत्म. ये तो बस ds by dt है ना. ds by dt इसके लिए क्या आएगा, ये वाला C2 के लिए आपके तो फास्ट दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे dt by dt करोगे तो 1 आ जाएगा, और ds by dt क्या आएगा, ds by dt mod of ds by dt आएगा स्क्वायर रूट ऑफ dx dt होल स्क्वायर प्लस dy dt होल स्क्वायर प्लस dz dt होल स्क्वायर. सिंपली विल गेट जस्ट 1, and that's why there is just 1. Is it clear now? यस सर, समझ आ गया एकदम. ठीक है. फिर इवेलुएट c 2x ds, which c is the arc of the parabola y equal to x square from 0 0 to 1 1, followed by the line segment joining 1 1 to 1 2. Hello. Yes. Sir, I want to say something. Yes. सर कल सर रिपब्लिक डे है सर. Okay. तो सर मैं उस पर कहना चाहता हूँ कल सर हम लोग आज़ाद हो जाएंगे. Okay. Anything more you want to say? सर आज मुझे बहुत बढ़िया लगा पढ़ के. Okay. थैंक यू सर. Okay. Okay, let's move to the example 3.4. So we need to evaluate integration c 2x ds, where c is the arc of the parabola y equal to x square from 0 0 to 1 1, followed by the line segment joining 1 1 to 1 2. Solve this.
कंप्लीट हुआ ये वाला प्रॉब्लम? सर C1 का आया 5√5 -1 डिवाइडेड बाई 6 ओके और C2 का आया 2. okay, let's move. So first your C1 is actually the parabola. Okay, so for parabola we can construct it as x equal to t and y equal to t square, and for the second case C2 we can take x equal to 1 and y equal to t. So this is our parameterization. So in the first case your t is varying from 0 to 1 and t varies from 1 to 2. So on C1 your dx is equal to just dt and dy equal to 2t dt, and your ds becomes square root of 1 plus 4t square dt. Similarly on C2 ds equal to dt, then integration c 2x ds, integration c1 2x dx, integration c2 2x dx is 0 to 1 2t square root of 1 plus 4t square dt plus 1 to 2 2 into 1 dt. So it is just you need basic numerical calculation, there is nothing special in it, and if you just solve it you will get 5√5 minus 1 by 6 plus 2. Is it the final answer to you, Sumitra? 5√5 minus 1 by 6 Yes, plus 2? yes, sir. Okay, and also you can just if you want you can just add this 2 here, so you will get 5√5 plus 11 by 6. Okay, so next is you need to evaluate integration c y sin z ds, where c is the circular helix given by xt equal to cos t, yt equal to sin t, and your zt is equal to t, and your t varies from 0 to 2 pi. Now solve this problem. सर इसका आंसर है √2 पाई. बढ़िया, एकदम very good. So c Thank y you, sir. sin z ds, your integration goes from 0 to 2 pi, your y is sin t, and hope y is sin t, okay, and z your t, z is t, so sin t into t, and in the square root of you need to take dx dt whole square plus dy dt whole square plus dz dt whole square, so you get sin square t plus cos square t plus 1, and this sin square t plus cos square t equal to 1, and then 1 plus 1 is square root of 2, so square root of 2 t sin t dt, if you integrate it t sin t dt you will get square root of 2 pi. Here is just you need to implement the integration by parts and you will get the answer, square root of 2 into pi. Okay,
So now there is another problem. This problem is you need to integrate c y dx plus z dy plus x dz, and you need to integrate it over so how you will do? So here integration c y dx is just y into dx dt into dt, and then you use parametric segment, again integration z dy, so z into dy dt into dt, and again integration plus integration x dz dt into dt. So that means x dz dt into dt, that means again you need the parametric form, you take differentiation and then integrate over t. So the line segments from these are 200 to 345 and then 345 to 340. So first you integrate over this 200 to 345 and then 345 to again 340. So for the first case, the parametric representation will be 200 to 345 will be t is varying 1. Okay, your xt is equal to 2 to 3. So your xt will be 2 plus t, where your t is varying from 0 to 1. Again your yt will be varying from 0 to 4. So the expression for yt will be 40. And for z it is varying from 0 to 5, the expression for zt will be 5t. So the parametric representation will be xt equal to 2 plus t, yt equal to 40 and zt equal to 5t. And then for the c2 your expression will be 3, 4, 5 to 340. So that in that case xt is fixed at 3, yt equal to 4 and zt is varying from 5 to 0. So your zt will be 5 minus t, where your t is varying from 0 to 5. So now you need to just put those values and you need to integrate over. सर माइनस सर C1 है 224.5 और 15 माइनस का है C2. आंसर आया है सर 9.5. टोटल आंसर 9.5. ओके ओके, हाँ गुड आंसर. एंड ऑल्सो थोड़ा आराम से बोलो, हाँ जोर से आवाज़ आ रहा है, आराम से. ओके ओके सर. वेरी गुड. ओके ओके चलो, तो C1 C2 का एक्सप्रेशन आ गया है. C1 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 प्लस टी, वाई इक्वल टू 40, जेड इक्वल टू 5t, 0 इज लेस देन इक्वल टू t, लेस देन इक्वल टू 1, C2 इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5 minus 5t. And then you need to integrate it just as I have discussed, that just you need to break it as y dx dt into dt plus z dy dt into dt, x dz dt into dt, and then you need just 40 dt plus 5t into 4 dt plus 2 plus t 5 dt 0 to 1, and then 3 minus 5t, that becomes 3 minus 5t, because your overall 3 and 4 they are constant, so you will only have a term from here, that means dz dt, this x into dz dt, your x is equal to 3 and from your dz dt you get minus 5 dt, so that becomes the final answer will give you 49 by 2 minus 15, that means 9.5. Now we will proceed to line integration over vector fields. These are not important. Okay, there will be maybe some. Okay, so
just by saying vector field. Okay, I am just keeping this slide open to you. Just read this passage clearly. I am just rejoining with you just after 1 or 2, maybe 1.5 minutes. Okay, just read, just first read whatever written in this slide, and then how to define the gradient field of the vector fx y z. Okay. Okay, so one of the important concept here comes from the called gradient. So what we say by saying gradient? So gradient is actually a vector quantity. If you have a scalar function, let fx y z be a scalar function from domain r cube to r, and if your, this is a typo, that is not yy, it is fy. If fx, fy and fz exist, then the gradient field of fx y z is the field of gradient vectors.
grad f equal to gradient of f del f del x I cap plus del f del y j cap plus del f del j k cap, and this is called gradient of f. If भाई किसी को गाना सुनना है तो क्लास रीप करके गाना सुनो यार, ऐसे अचानक गाना मत चला दो. ओके, so grad f equal to del f del x I cap plus del f del y j cap plus del f del z k cap. And so I am just giving one example. For example, the gradient field fxyz equal to xyz yz I cap plus zx j cap plus xy k cap will be its gradient. And if for any vector field, if for any vector field if you have this kind of function f, then this vector field f is called a conservative vector field. Okay, for example, the gravitational force field is actually a conservative field. There is, I will upload the note, so no need to worry about it. So next move to this, I will not, just I have told you that the line integral of a vector field, force field f along curve C is called the work done by moving particle on C under the force field f. So that is f dot dr. Just recall that I have just told you this about in the initial, just in the first. So I will just, this line integral will be f dot dr here. Okay, f dot dr, and this dr you can write it as dr dt, right? So your f is x square I cap minus xy j cap along the first quarter unit cycle in the first quadrant, and then f(t) is equal to cos square t I cap minus cos t sin t j cap. Your dr equal to minus t is I cap plus cos t j cap, because you are integrating over this field, this line cos t I cap plus sin t j cap, and if you integrate this f dot dr, your t varying from 0 to pi by 2, your f dot dr, your f is just, you need to put cos square t minus I cap minus cos t sin t j cap, then dr is equal to dr dt, then minus sin t I cap cos t j cap, their dot product. I think you all are familiar with dot product and square cross product, right? You all know what is dot product and what is cross product, right? सबको आता है ना डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट? ओके, ओके, -2/3. ओके, तो ये वाला पार्ट में कोई इशू तो नहीं है ना? ये आपको सबको मतलब समझ में आ गया है ना? सो आई विल जस्ट, ओके, so now move to one problem that evaluate C f dot dr where f is cos xy I cap plus yz j cap plus zx k cap, and C is the twisted cube given by x equal to t, y equal to t square, z equal to t cube, 0 varying from t less than or equal to 1.
27/28. ओके चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो. एफ डॉट डी आर एफ इक्वल टू एक्स वाई आई कैप वाई जेड जे कैप जेड एक्स के कैप. आपको तो पता है क्या करना होगा, ऑलरेडी हमने एक डिस्कस कर दिया है. सो दैट विल बी जस्ट आप पहले ट्राई करो. पहले आप एफ डॉट डी आर की फॉर्म में लिखो. उसके बाद हर किसी के साथ डी आर डी टी का जो एक्स वाई डी एक्स डी टी एक्स वाई के जगह पे टी टी लगाना. वाई जेड डी वाई डी टी, तो वाई जेड के जगह टी इंटू टी स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी विल बी 2t, सो दैट विल बी 4 समथिंग. सो ऐसे ऐसे करके आप टी क्यूब के लिए आएगा जेड एक्स के कैप एंड दिस टी क्यूब देयर विल बी टी क्यूब बिकॉज जेड के कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा. सो दैट विल बी जेड एक्स इंटू जेड. सो जेड एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू टी, दैट मीन्स टी का पावर 4 एंड दिस विल बी 3t स्क्वायर, सो 3t की पावर 6. तो ऐसे ऐसे करके आपको इसका पूरा सोल्यूशन निकालना होगा. Sir, 27/28. 27/28. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज एम डी एक्स. तो हमने एम एन का मतलब क्या है, पहला इंटीग्रेशन. तो दिस इज एक्स वाई के जगह पे आप टी स्क्वायर डाल दो, तो दैट विल बी टी टू टी स्क्वायर और डी एक्स डी टी बनता है 1, तो टी क्यूब डी टी, तो दैट इज 1/4. सिमिलरली एन डी वाई विल बी वाई जेड डी वाई. So t square into t cube into 2t dt, that will be 2/7, and again p, that means this zx into dz dt equal to 3t square, so 3t की पावर 6 dt equal to 3/7. अब आप सबको ऐड कर दो, 1/4 plus 2/7 plus 3/7 will give you 27/28. Now there is something concept called conservative vector field. I will not go into the proof. This is called fundamental theorem for line integrals. It just say that f is a conservative vector field with potential f, then the line integral over any smooth curve joining points a to b can be evaluated from the potential itself just by putting x1 y1 z1 and x2 y2 z2 in the potential function. That means if a vector field is conservative, then the line integral is path independent. Okay, समझ में आया ना. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कोई आपको वेक्टर फील्ड मिल गया जो वेक्टर फील्ड आपका कंजर्वेटिव है, देन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन ओवर एनी स्मूथ कर्व इज एक्चुअली पाथ इंडिपेंडेंट. आप पैराबोला को ले लो, कुछ भी ले लो, आपका अल्टीमेटली तो कोई भी टेढ़ा-मेढ़ा पाथ अगर दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले देखना कि वो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं है. So this is sometimes called fundamental theorem for line integrals. Now we will apply this thing. ये आप लोग थोड़ा पढ़ लेना. हाँ, मैं इसको ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है. ये कार्ड्स क्या होता है क्या नहीं होता है इसको भी लेकर थोड़ा देखना, इसके क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं. सो देखो, फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड एफ वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप अलॉन्ग एनी स्मूथ कर्व जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 3 9 एंड 1,6 -4. आप बताओ पहले कि ये कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं है, और अगर कॉन्जर्वेटिव है तो इसका पोटेंशियल क्या है. सो जस्ट टेल मी दैट वेदर इट इज़ ए कॉन्जर्वेटिव एंड ऑल, एंड इफ इट इज़ कॉन्जर्वेटिव देन टेल मी दैट what will be its potential function.
सर कंजर्वेटिव आया। कंजर्वेटिव आया। व्हाट विल बी द पोटेंशियल? एक्स वाई जेड होगा ना? तो फाइनल आंसर क्या आया? जस्ट एक्स वाई जेड पे 16 माइनस, हाँ, माइनस सर 20। एक्स वाई हाँ प्लस हाँ, कांस्टेंट। 3 3। ओके, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्जर्वेटिव है। तो कॉन्जर्वेटिव के लिए क्या देखना होगा? यहाँ पे इसका डेल एफ डेल एक्स, इसका डेल ये जो डेल फर्स्ट कंपोनेंट का डेल एफ डेल एक्स इसके साथ डेल डेल वाई के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली इसका देखो ये कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं, और फिर इसके तीनों का देखना। तीनों का क्या करोगे? तीनों का होगा कॉन्जर्वेटिव होगा अगर दिस डेल डेल एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू डेल डेल वाई ऑफ दिस, और उसके बाद इसका एक कौन वो है ना डिटर्मिनेंट करके हम देख लेते हैं। अच्छा, डेल डेल वाई डेल डेल एक्स एंड देन डेल डेल जेड इक्वल टू डेल डेल वाई एंड देन अगेन डेल डेल एक्स। वो सर्कल लूप पे चलता रहता है। हाँ, एम वाई के साथ होता है एन एक्स, एन जेड के साथ होता है पी वाई एंड पी एक्स के साथ होता है एम जेड। ओके, एक सर्कुलर लूप चलता है। मैं डिटर्मिनेंट वाला मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट करके भी आप देख सकते हो। आपने एम एन पी लिख दिया, फिर डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, अगेन एम एन पी लिख दिया, और उसके बाद आप उसका जो रो वाइज वो कर लो, और फिर जो मतलब क्या कहते हैं वो इंटरेक्शन वाइज कंपोनेंट वाइज आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर डेल डेल वाई डेल पी डेल वाई इक्वल टू डेल एन डेल जेड है ना, फिर डेल एम डेल वाई इक्वल टू डेल एन डेल एक्स, एंड फाइनली प्रोबेबली डेल पी डेल एक्स इक्वल टू प्रोबेबली डेल एम एम विल बी जेड डेल एम डेल जेड। तो ऐसे देखना होता है। तो पहले ये तो देख लो, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो क्या ये कॉन्जर्वेटिव है?
चलो पहला प्रॉब्लम क्या ये कॉन्जर्वेटिव है बताओ, एक्स माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस टू जे कैप। Not conservative. यस। सेकेंड कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव। सो 3 प्लस 2xy, सो डेल डेल करोगे तो आपका बन जाएगा डेल डेल वाई करोगे तो बनेगा 2x, और इसका डेल डेल x करोगे तो बनेगा 2x। तो दिस इज एक्चुअली कॉन्जर्वेटिव, राइट। द सेकेंड वन इज द कॉन्जर्वेटिव। और ये थर्ड वाला मुझे आप होम टास्क चेक करना, ठीक है। ओके अब ये वाला प्रॉब्लम को ट्राई करो। फाइंड द पोटेंशियल फॉर द वेक्टर फील्ड एफ इक्वल टू 3 प्लस 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जे कैप। तो आप रिमेंबर करो, पहले कंसीडर करो कि फाई एक्स वाई यू हैव सम function, scalar function phi x y. If you take gradient of that phi, that means del phi del x will be this and del phi del y will be this. So del phi del x इसके बाद उसको करो और del phi del y, फिर दोनों तरफ से phi का टर्म इक्वेट करो और you will get the final answer for phi. चलो करो इसको, निकालो क्या स्केलर फील्ड आ रहा है देखो।
ओके, ये वाला प्रॉब्लम हुआ, आपका स्केलर फंक्शन निकला 3 + 2xy x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। कैसे करना पड़ेगा इसको, आप डी डी एक्स, इसको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। सो इफ़ यू इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, you will get 3x plus x square y, and then there will be a function of y, and fy will be x square minus 3y square, fxy equal to x square y minus y cube plus hx, because you are integrating over y, so that will be hx, and then y cube plus constant, and there hx equal to 3x plus constant. So these two things you need to add, because you need to compare term by term, because if scalar function exists, it is unique up to a scalar addition. Yes, sir. Okay, so then you get your final scalar function as 3x plus x square y minus y cube, कांस्टेंट को हटा दो, तो उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि के आप फाइनली जब वो माइनस करोगे तो वो कट हो जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो अब आपका फाइनल जो पॉइंट है दैट इज़ यहाँ पे आपको पाई पुट करना है। तो अगर पाई पुट करोगे यू विल गेट ई की पाई साइन पाई एंड ई की पाई कॉस पाई। तो साइन पाई तो जीरो एंड कॉस पाई आ गया, माइनस ई की पावर पाई, एंड अगर जीरो लगे तो ये बन जाएगा ई पाई, है ना। तो एफ एक्स पाई वाई पाई माइनस एक्स जीरो वाई जीरो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर 0 is 1, and then that will be e की पावर, I may be some wrong, no that is x cube ना। तो यहाँ पे आप x और y का वैल्यू पुट कर दोगे। एक जगह पे आपका x का वैल्यू है, अगर x यहाँ पे 0 ले लोगे t, तो आपका x का वैल्यू आएगा 0 एंड y का वैल्यू आएगा 1, और अगर आप पाई ले लोगे तो आपका x का वैल्यू अगेन आएगा 0 और पाई y का वैल्यू आएगा e की पावर पाई, तो जस्ट ये वाई क्यूब, तो आपका वो रह जाएगा e की पावर 3 पाई प्लस 1 आपका आंसर रहेगा। ओके, इज इट क्लियर? बिकॉज कॉस पाई इज नेगेटिव, तो माइनस e की पावर पाई आएगा, माइनस e की पावर पाई का आप क्यूब लोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर e की पावर 3 पाई आ जाएगा। तो योर फाइनल आंसर विल बी e की पावर 3 पाई प्लस 1। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Next, move to the next problem. Find a potential for the vector field f equal to y square I cap plus 2xy e की पावर 3z plus 3y e की पावर 3z k cap. Anyone wants to say something? For conservative vector field grad of f, then why find integration? No, we are not finding integration. We are just putting the values there, f dot dr, so they will be just path independent, so no path, we are just putting the final values x pi y pi minus x0 y0, that t equal to pi minus t equal to 0. We are not doing the entire integration here. Is it clear? Vivek Kumar, is it clear? Are you with me? Is it clear? We are not doing Yes, integration, sir. we are just putting the Yes, final sir. values. Okay, so ओके, तो अब ये वाला प्रॉब्लम का आप वो निकालो, फाइंड द पोटेंशियल फॉर द वेक्टर फील्ड एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy e की पावर 3z जे कैप प्लस 3y e की पावर 3z के कैप, इसका निकालो।
आपको पोटेंशियल फंक्शन निकालना है बस। चलो इट विल बी आवर लास्ट प्रॉब्लम, कर लो, सॉल्व कर लो इसको। फाइंड ए पोटेंशियल वेक्टर फील्ड, ट्राई करो। आपको बस ऐसे इंटीग्रेशन ही लेना है और उसके बाद उसको एडजस्ट करना है टर्म के साथ, टर्म दूसरा टर्म। सर xy² प्लस y e टू द पावर 3z। क्या आया? xy xy² प्लस y e टू द पावर 3z। xy² प्लस e की पावर 3z। ओके, बाकी किसी को करने देते हैं। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो? सविता जोशी मैम, आर यू ट्राइंग? Yes, sir. ओके। मिस्टर रेड्डी, आर यू ऑल्सो ट्राइंग? I think he left probably. Okay, rest of them, are you also trying? Vivek? Yes, sir. Okay. Nimisha Mali ma'am, are you also trying? Okay, perhaps he left it. Okay, so please try this problem. I am giving you 1 or 2 minutes more. Okay, that will be last problem today. I will discuss the next part in the next class.
Sir, answer is xy square plus y e की power 3z. xy square plus y e की power 3z. XY square plus y e की पावर 3z. ओके, इज इट करेक्ट सुमित्रा? Yes, sir. XY square e की पावर 3z. Okay, let's plot set. So if f is the potential, then fx equal to y square, fy equal to 2xy plus e की power 3z, and your fz equal to 3y e की power 3z. So you need to integrate this with respect to suitable variables. Your f is xy square plus gyz, your f is xy square plus y e की power 3z plus hxz, f equal to y e की power 3z plus phi xy. Taking gxz equal to y equal to 3z, phi xy equal to xy square, hxz equal to k a constant, we get one such f. Sometimes matching may not be obvious, so differentiate the first. So you get fy equal to 2xy, gy yz, so you get 2xy plus e की power 3z, and this gy yz equal to e की power 3z, है ना? आपने दोनों को डेरिवेटिव लिया, ठीक है? आपका एक तरीके से एफ ए आया, इधर से एक एफ ए आया, तो यहाँ से मैचिंग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं, मैचिंग तो ईजिली हो रहा है. ये जी वाई जेड आपका बन गया वाई ए की पावर 3z, और आपका एच एक्स जेड आप इसको जीरो ले लो, और फाई एक्स वाई को आप ले लो एक्स वाई स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई स्क्वायर वाई की पावर 3z प्लस के. Okay, so we have some time left still. So is it clear till now whatever we have discussed? अभी हमारे पास थोड़ा टाइम और है, ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो नेक्स्ट यू हैव शो दैट द वेक्टर फील्ड एफ इक्वल टू ए की पावर एक्स कॉस वाई प्लस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड माइनस ए की पावर एक्स साइन वाई जे कैप प्लस एक्स वाई प्लस जेड के कैप इज कॉन्जर्वेटिव बाई फाइंडिंग ए पोटेंशियल फॉर इट. अब इसको सॉल्व कीजिए. इसका आप निकालिए पोटेंशियल. सो दैट द वेक्टर फील्ड इज दिस इज कंजर्वेटिव बाय फाइंडिंग ए पोटेंशियल फॉर इट. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, चलो. करो करो, इसको कोशिश करो.
सुमित्रा थोड़ा जल्दी करो इस प्रॉब्लम को। हो रहा है, कर रहे हो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व? चलो कोई बात नहीं। तो कंसिडर लेट एफ एक्स वाई टू बी द पोटेंशियल, देन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस वाई जेड, एफ वाई एट एक्स जेड माइनस ई की पावर साइन एक्स ई की पावर एक्स साइन वाई, योर एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड. So you integrate the first with respect to x to get fx equal to e की पावर x cos y plus x y z. एक g y z आएगा क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम ए कांस्टेंट यू विल गेट ए फंक्शन. नाउ इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, यू विल गेट अगेन एक्स वाई जेड प्लस e की पावर x cos y, and if you integrate this f z you will again get xyz plus z square by 2 प्लस अ फंक्शन x. तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर x cos y एक्स वाई जेड प्लस एच जेड जी वाई जेड. तो यहाँ से दोनों से आपको ये जी वाई जेड का आइडिया आ गया. तो अब इस जी वाई जेड एफ ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस एक्स वाई जेड जी वाई जेड, तो अब आप इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो आपका ये आएगा माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस एक्स जेड प्लस जी वाई वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई. यहाँ से आया. सो नाउ फ्रॉम हेयर यू विल गेट जी वाई वाई जेड इक्वल टू 0. दैट मीन्स this gy yz will be a function of z only. So that means e की power x cos y plus xyz plus hz. This is your hz. Now take derivative with respect to तो ये आपका f बन गया. अब आप इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z निकालिए, तो आपको ये आएगा एक्स वाई प्लस जेड. तो यहाँ से आएगा एक्स वाई प्लस जेड, ये आपका एक्स वाई प्लस जेड, और यहाँ से आएगा एक्स वाई प्लस जेड डी एच डी जेड. तो डी एच डी जेड से आ गया जेड, सो दैट मीन्स जेड स्क्वायर बाई 2. तो योर फाइनल आंसर विल बी ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट. इज इट क्लियर? So it is called this MNP XYZ. So you can write it in terms of MXYZ, NXYZ, PXYZ. So this is called a differential form. Okay. So this is called a differential form, and this differential form
if you have some potential function, then this can be written as del f del x, del f del y and del f del z. सो यहाँ से भी आप कंजर्वेटिव को वो काम कर सकते हो. सो देयर इज a problem here which I will discuss. So you need to show that the differential form y dx plus x dy plus 4 dz is exact. So what you need to show? So first of all, there exists some potential function. If some potential function, so what will be that potential function? That potential function is nothing but xy plus 4z. And if you integrate this, you can write it as d of xy plus 4z. And d of xy plus 4z, if you integrate it, you will get d of xy plus 4z plus k. अब xy तो आपका इस पे क्या करना है, आपको बस 1 1 1 और 2 3 -1 का वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका आंसर आएगा -3. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? मैं इस स्लाइड पे आई विल कीप इट एट फॉर 1-2 minutes. इन द नेक्स्ट क्लास I will start very very important called Green's theorem. We will discuss problems on Green's theorem and all. ठीक है, अभी मैं ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए ओपन रखता हूँ, आप थोड़ा इसको देख लो. ठीक है, okay, is it clear? So should I stop now? I am stopping now. Okay, thank you all for joining. Okay, thank you.